मेरे साथ आज है वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी आशुतोष, मेरे लिए टाइम थैंक निकाल यू। के दिया। तो मैं शुरू करना चाहूंगी ऑब्वियसली विद द लेटेस्ट, जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद है, उनके अरेस्ट के बाद अब दोनों तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग बयान आए हैं। कल ये कहा गया था कि आप आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि बीजेपी की बौखलाहट है 2024 से पहले। आज जो है बीजेपी हैज कम अप विद स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स। सुबह से जिस तरह के हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इट इज सम सॉर्ट ऑफ हिपोक्रेसी ऑफ द आम आदमी पार्टी, क्योंकि पंजाब में भी कांग्रेस के नेता के ऊपर इस तरह की कार्रवाई होती है तो दैट इज जस्टिफाइड, एंड द मोमेंट इट इज ऑन एन आप लीडर इट बिकम्स बीजेपी's नर्वसनेस अहेड ऑफ 2024। आपका क्या कहना है इस पर? सबसे पहले तो मैं ये लोगों को स्पष्ट कर दूं कि संजय सिंह मेरे व्यक्तिगत तौर पर भी दोस्त हैं। हम राजनीति में एक साथ थे आम आदमी पार्टी में, और हमारी दोस्ती आज भी बनी हुई है। तो दर्शकों को ये स्पष्ट होना चाहिए, डिस्क्लोजर मेरे लिए करना बहुत जरूरी है। जहां तक मैं संजय सिंह को जानता हूं, संजय सिंह एक निहायत ही बेहद ईमानदार आदमी है, और मुझे तो कभी इस बारे में कोई शक नहीं था उनकी ईमानदारी को लेके। राजनीति में है तो तमाम तरीके के आरोप भी लगते रहते हैं, और जिस तरीके से वो नरेंद्र मोदी और अडानी के मसले पर खुलकर बोल रहे थे, मुझे उसी वक्त इस बात की आशंका थी कि उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होगी, और उनको भी इस बात की पूरी आशंका थी कि देर सवेर उनके ऊपर ईडी या इनकम टैक्स या इस तरीके के कोई छापे पड़ेंगे और फिर शायद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन इतनी जल्दी होगा मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। जब उनके घर छापे की खबर आई तो मुझे लगा कि छापा है, शाम तक वो चले जाएंगे, लेकिन देर शाम को जब गिरफ्तार करने की खबर आई तो आशंका मेरी काफी हद तक सही साबित हुई। जहां तक इन छापों का प्रश्न है, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये छापे सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों के ऊपर क्यों पड़ रहे हैं। अभी जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो खबर इस बात की आ रही है कि तमिलनाडु के अंदर भी जो डीएमके के नेता हैं, सांसद हैं, उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, तेलंगाना में छापे पड़ रहे हैं, बंगाल में छापे पड़ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के लोगों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। तो ये अचानक क्यों हो रहा है? क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि विधानसभा के चुनाव करीब आ रहे हैं? क्या लोकसभा के चुनाव करीब आ रहे हैं? तो ये प्रश्न बहुत गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि दरअसल जो जो भ्रष्ट है उनके यहाँ ही छापे मारे जा रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की गारंटी देती है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ एक भी आदमी भ्रष्टाचारी नहीं, सब राजा हरिश्चंद्र की तरीके से हैं? ये वही पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर घूस लेते हुए पकड़े गए थे जब बंगारू लक्ष्मण। ये वही पार्टी है जिसके कैबिनेट मिनिस्टर जुदेव वो कैमरे पर घूस लेते हुए पकड़े गए थे। वही पार्टी आज ये दावा करे कि नहीं, उनके यहाँ तो सब कुछ ठीक है, उनके यहाँ सारे लोग ईमानदार हैं और सारी गलतियां विपक्ष में। तो ये लोगों के गले ये बात पचती नहीं है। मेरा साफ तौर पर मानना है कि सरकार डिस्परेट है। सरकार इस वक्त कहीं ना कहीं वल्नरेबल अपने आप को महसूस कर रही है। मैं ये नहीं कहूंगा सरकार डरी हुई है, लेकिन सरकार अपने आप को वल्नरेबल महसूस करती है। सरकार को ये लगता है कि जिस तरीके से सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, और वैसे में 2024 के लिए एक बड़ा नैरेटिव खड़ा हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। तो वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि जो तमाम विपक्षी दल के नेता हैं ये सब भ्रष्ट हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं और ये लूट खसोट पे लगे हुए हैं। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि इस देश के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी ये कहे कि भ्रष्टाचार से ऊपर है तो इस देश का कोई आदमी उसको यकीन नहीं करेगा, न बिलीव करेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि नहीं वो ईमानदार है बाकी सब चोर है, तो इसको भी कोई यकीन नहीं करेगा। मुझे लगता है कि ये डराने की कोशिश है और तमाम राजनीतिक दलों को अपना मुंह बंद रखने की कोशिश है, ताकि लोग अडानी के मसले को ना उठाएं, नरेंद्र मोदी के मसले को ना उठाएं, उनकी आलोचना ना करें। तो पहले सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह, आप ये कह रहे हैं कि सिलेक्टिव टारगेटिंग है और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सब एक एक करके सबको अरेस्ट किया जा रहा है। कई लोगों का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो सकती है। आपका इस पर क्या राय है? दूसरी बात, आप टू व्हाट एक्सटेंट यू थिंक आम आदमी पार्टी इज अ थ्रेट फॉर द बीजेपी? अगर आपका आर्ग्यूमेंट मान के चले कि किसी तरह से एक थ्रेट परसेप्शन है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो किस तरह का, क्यों दबाना चाह रहे हैं, बड़े नेताओं को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी जो कहती है उस पर तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, और ना मुझे उस पर कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी करनी चाहिए। दो चीजें हैं। पहली बात यह है कि लिकर पॉलिसी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और इसलिए जब लिकर पॉलिसी आई थी उसके फौरन बाद आपको याद होगा जब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे, तो जांच के आदेश के फौरन बाद इस पॉलिसी को रोल बैक किया गया था। मेरा मानना है कि अगर पॉलिसी ठीक थी तो आपने रोल बैक क्यों किया?
तो इसलिए उस पॉलिसी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मुझे दिखाई पड़ती है। जहां तक संजय सिंह के रोल की बात है, संजय सिंह का तो कोई लेना ही देना नहीं है। वो सरकार के, दिल्ली सरकार के काम में कभी एक्टिव भी नहीं रहे, वो कोई मंत्री भी नहीं है दिल्ली सरकार के अंदर, ना उनका बिजनेस में किसी तरीके से कोई लेना देना है। तो इसलिए उनके ऊपर जो आरोप लगाए मैं उस पर ही टिप्पणी कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरे मित्र है और मित्र रहेंगे, और मैं जानता हूं इस बारे में कि बहुत ईमानदार आदमी है। तो इस उस संदर्भ मेरी टिप्पणी ठीक है। बाकी आम आदमी पार्टी क्या करती है, उनके लोगों के ऊपर किस तरीके के आरोप लग रहे हैं, उस पर मेरा टिप्पणी करना उतना ठीक नहीं होगा। जहां तक आम आदमी पार्टी के ये कहने का प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे डरती है, देखिए आम आदमी पार्टी को सबसे पहले साबित करना पड़ेगा कि वो नेशनल पॉलिटिक्स में उसकी कोई जमीन है। आप 2014-2019 के लोकसभा चुनाव को देखिए, एक पार्टी कब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती दे सकती, जब वो राष्ट्रीय स्तर पर उसके पास सीट कम से कम 150 सीटें आएंगी तब ना। अभी लोकसभा में आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं, सिर्फ एक सीट अभी जो पंजाब से जीत कर आए वो 2014-2019 दोनों लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को खाता तक नहीं खुला। पंजाब में 2014 में 4 सीटें मिली थी और 2019 में सिर्फ एक सीट मिली, और वो सीट भी जब विधानसभा के चुनाव हुए, संगरूर की सीट थी, तो उसको भी वो हार गए। जो मुख्यमंत्री की अपनी सीट थी, भगवंत सिंह मान की सीट थी, वहां सिमरनजीत सिंह मान जीते। बाद के एक लोकसभा का चुनाव हुआ जहां वो जीते हैं। तो लोकसभा के अंदर जिनकी सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरीके की कोई चुनौती देने की स्थिति में है नहीं। ये एक तरीके के रेटरिक्स है। विधानसभा के चुनाव में ये मान सकता हूं कि दिल्ली में मजबूत है, पंजाब में मजबूत है, गोवा में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, गुजरात में भी खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब और दिल्ली के अलावा उनका कोई ऐसा वजूद नहीं जिसके आधार भारतीय जनता पार्टी उनसे परेशान हो। तो ये रेटरिक्स है। इस रेटरिक्स को बीजेपी भी समझती है और आम आदमी पार्टी के लोग भी समझते हैं। इसलिए इसका कोई, मेरी नजर में कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है। फिर भी आप कहते हैं कि ये इंटिमिडेशन टैक्टिक्स तो है ही, और ये एक सिलेक्टिवली विपक्ष के राज्यों में इस तरह के रेड्स किए जा रहे हैं। I want to ask you about the other big story also, which is in public discourse about the arrest of journalists and the founder of NewsClick. उस पर आपका क्या राय है? बिकॉज उस पे भी ओपिनियन सीम्स टू बी डिवाइडेड, देयर सीम्स टू बी एविडेंस कि हाँ कुछ इस तरह से चाइनीज लिंक्स थे, इस तरह का मनी ट्रेल ट्रेस किया जा रहा है। आपकी जानकारी में उस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो विशुद्ध तौर पर दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्रैकडाउन ऑन द प्रेस, एंड स्पेशली टू इंटिमिडेट, टू थ्रेटन, and to send a message to the digital platforms. And a lot of digital platforms, they are doing good journalism. I'm not saying every digital platform is doing good journalism, but a lot of them are doing good journalism. And since they are doing good journalism and they're asking questions and they are quite critical of the government and quite critical of Prime Minister Narendra Modi, in that sense, when in the context that entire television channels, almost 90%, they have surrendered to the government. They don't ask questions to Prime Minister. They only say what they're asked to be to say. So in that context, this irreverence of digital media has been a pain for the Prime Minister and his cabinet and the BJP and their supporters. So this is basically a crackdown. I don't believe that the NewsClick was indulging into some anti-India activity. If a riot is happening and the reporter is going, he will cover it. She will cover it. If there is a kind of a farmers movement which is unheard of, the biggest ever farm movement for such a long time. If reporters are going there, they will cover it. Any reporter will cover it. And if you painted that this event was covered to create a threat against the sovereignty of the government and the sovereignty of the state, I think that's a bad argument, and it has no basis. And I don't believe this NewsClick. Yes, NewsClick might have got some funds from any company or anybody who's related to China, but then the PM's Care Fund also getting funds from the Chinese companies. And there are other sources of which are also getting money from the fund from the Chinese companies. So does it mean anybody and everybody who is getting funds from the Chinese companies, that China is indulging into anti-India activity? That way, the India should stop any kind of business transaction with the China. No export, no import. India's export and import is improving every day.
This is basically a crackdown on the press. This is basically to force them to submit to their diktats and nothing else. But unfortunately, they're using anti-terror law so that these journalists, they don't get out and they languish in jail for a longer period of time. Now, I also heard that they are also trying to link them with the urban Naxals. So it's a sad situation. I will not say that the emergency has come, but seriously, it's a situation where the freedom of the press, the voice of dissent is being curtailed, and the space for the democracy is shrinking on a daily basis. Then what is the future for journalists? Journalists who have certain integrity cannot work for mainstream channels because you are saying they pander to the ruling party. Journalists who are working for digital platforms have to be in perpetual fear that there can be a crackdown on them. I mean, you also are part of a renowned digital platform. How are we to survive? What is the way forward then for journalists? Government is too powerful. Any government, forget about this Modi government or the BJP government, any government anywhere in the world is always very, very powerful because they are the government. They have all the agencies with them. My only submission is that the journalists like us, like you, like platform like us, like Satya Hindi and others, they are trying to do good journalism. But how long? If government want to crack down on them, how long they will survive? वो एक हिंदी में कहावत है, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी. तो बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी. ये एक sad situation है, और in this sad situation, at least I had a career of almost 30 years in journalism. Never thought that time will come when I have to think twice before I utter a word. Even when I'm talking to you, I have to measure my words, every word. Maybe somebody's ego is hurt. Maybe somebody's religious feelings are hurt. Maybe somebody's ethnic feelings are hurt. You never know that when somebody goes to the court and files an FIR against you, and you languish in jail. So this is a very sad situation right now. And in this sad situation, it's better that we keep doing what we are doing without thinking that what will happen in future. Nobody knows future. What will happen in future, nobody knows. So who knows that maybe after 2024, they are no more in the government. That is also a possibility, because elections is not only about that this government is coming back or that government is coming back. Election opens the opportunity that anybody can lose elections, anybody can be out of the government. So my only submission is, as long as we can pursue our good journalism, we should pursue that good journalism irrespective of the fact whether we survive or we don't survive, whether we end up in jail or we don't end up in jail. When the freedom movement was there, did Gandhi think about that if we do something, if he did something, or if he's doing something, he will end up in jail and his family has to suffer? If that thought would have occurred to him, then probably we would have never got a freedom what we had. So because he thought that this is what has to be done, he did it. As a journalist, what is happening now, we should also do it what we think is right, irrespective of the results, and irrespective of the follow-ups. तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मेरे लिए यू आर वन ऑफ माय मेंटर्स. इनफैक्ट हमने जो सीखा है, जैसे हाउ वी स्टार्टेड, अभी जिस तरह का नैरेटिव हो गया है, वो जब मैंने शुरू किया था तब तो था नहीं इतना, कि प्रो एंड एंटी. हमें ये सब पता भी नहीं था. हम बस अपना काम करते थे, और whatever wrongdoing that we see around, we are supposed to expose. And obviously ये था जर्नलिस्ट का काम कि आप जो पावर में है उनको क्वेश्चन करोगे, जो पावर में नहीं है उनको आप क्यों क्वेश्चन करोगे. यही हम सीखते आए. अब आप जब पावर में है उनको क्वेश्चन करते हो तो आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट बन जाते हो. और मुझे ये कभी भी समझ में नहीं आया कि ये प्रो एंड एंटी क्यों कहा जाता है. जर्नलिस्ट का काम ही नहीं है प्रो एंड एंटी होना. I agree with you. That's why it's a sad situation today when there's a crackdown on the media house and his offices is locked, and editor is booked under the anti-terror law, and he probably will not get bail. Then sadly, a large section of the press, a large section of the journalists, and the large section of mainstream television channels, editors and the anchors, they're rejoicing. This is the saddest part. This really saddens me. How can you be happy when your colleague is in jail?
Your friend is in jail just because he's ideologically on a different platform. How can you be happy about that? They are forgetting that today what is happening to them, this can what is happening to them, this can happen to them also. Tomorrow, if government changes, if there is a regime change, and God forbid if equally vindictive governments comes into the picture, then where will they hide? So I think as a community, we journalists are committed to truth, to facts. We are not committed to any ideology. We might have an ideology. But while it's our duty to process facts. It's our duty to package fact before the people and tell them the truth, tell them the reality. Whether it hurts government or it doesn't hurt government, that is not my business. Because if we are called as a fourth state of a democracy, the fourth state, that the press is the only state in the democracy which doesn't have the power to punish somebody. Like parliament is very powerful, judiciary is very powerful, government is very powerful. Government has all kinds of enforcement agencies, all kinds of investigating agencies and inquiry agencies. Court can take anybody's law. Court is so empowered that they can take anybody's law. Similarly, the parliament is also powerful. Press don't have those kind of powers. So if press is not if press is not given freedom to speak, then what will it do? There has to be certain immunity with the press, because we can only write, we can only speak. If we get scared that if we speak something, we can go to jail. So that means this is a design to kill the fourth state. And if the fourth state is dead, then the democracy is also dead. I am reminded of what Thomas Jefferson has said when America was getting independence. He said that if the choice before me is whether we should have a press without a state or a state without press. He said, I want press without a state. I'll prefer to have a press without a state. Okay. So freedom of expression is sacrosanct. That should not be curtailed. Yes, I can understand there are people who are loudmouth, who speak all kinds of rubbish things, who are abusive. Abuse has no place. But you don't like my ideas, you don't like my speech. But today, if you are shutting me to speak, tomorrow I can shut you speak. So journalists with a conscience is now a very limited number, no doubt about that. I want to now shift focus to the 2024 elections, because I know you are a political analyst and you have a vast experience in observing the politics of this country. So now with the caste census or survey, as it's being called, many are saying that this could be sort of a game changer with the Nitish Kumar, Tejasvi Yadav raking up the caste issue again. It could corner the BJP government in many ways, especially if this demand now comes from the other states. Do you believe that in the Hindi heartland, in the Hindi-speaking area, this issue will gather momentum and it could have certain impact on the 2024 elections? This issue has already gathered a momentum because it's not that Nitish's government has decided to release caste census report and then it has become a news. Even the Karnataka election, Rahul Gandhi in a Kolar speech has demanded that there should be caste census. Nitish Kumar and the RJD, the government in power in Bihar, they've been talking about it for a very, very long time. They had come and met the Prime Minister also. It is a very important issue. Whether this will be a game changer or not, I'll keep I want to wait for some more time. But this is a very important issue, and this has really disturbed and perturbed the Prime Minister and the ruling party. Because the other day only the Prime Minister was talking about that those who are talking about the caste census, they are trying to divide Hindus. They are trying to divide societies. He has gone to the extent of saying that this is basically an agenda against the poor.
So when the Prime Minister is speaking in a public rally and he's saying something like this, and all the spokesperson are talking in the same language, that means the Prime Minister is worried. This issue is like atom bomb in that sense. I feel, if it is because 63% of the population in Punjab, in Bihar, 63% of the Hindu population in Bihar is OBC. And if they start demanding their share, then how the government will accommodate? And BJP, which has been trying to lure them into their fold, and has been very pompous that they had succeeded in that. Now, if they are asking questions that are you in favor of the caste census? Are you in favor of the OBC's reservations? And are you in favor of increasing their share of reservations according to the in proportional to their population? Can the government accommodate that? I doubt they would like to accommodate. So issue is very serious, and BJP, frankly speaking, doesn't know how to respond, how to counter this. Because if 63% of the Bihar population, if they decide to be angry with the government, angry with them, then the BJP will be wiped out in Bihar. Do you also think it's a counterfoil to the Hindu consolidation policy, which has been the main plank of the BJP? It can turn the tide against Hindutva. Yes, that's what the BJP fears. And BJP thinks that if they are, because see, ideologically they are committed for the Hindu unity, and whether we like it or whether we don't like it, they don't acknowledge the existence of the caste fault lines. They agree that there is a caste structure, but they're not willing to accept the fact that how the Dalits and the OBCs are treated in the past. Very recently, Mohan Bhagwat, RSS chief, has said that, and they were treated worse than the animals for the more than 2,000 years. And now the time for the upper caste to bear the brunt for another 200 years. Now the issue is, if you believe it, that they have been treated worse than animals, then what remedy you have? What reform movement you are willing to unleash? None. They talk about Hindu consolidation. They talk about the Hindu unity, but they are not willing to address the issues of the Dalits and the OBCs. So why this perception should not be high, that it is basically an upper caste movement and they want to keep their hegemony intact. And since for the electoral purposes, they need the support of OBCs and Dalits. So they accommodate them in the Council of Ministers. But when it comes to accommodating them in real life, in governments, in several social structures, they don't do that. Because they fear that if they start giving shares to OBCs and Dalits, then the upper caste will be very unhappy with them, and upper caste can lose them, can leave them. So it's a difficult subject for the BJP. And are they not spinning it a bit, Ashutosh? Because what I heard the Prime Minister's statement, he says, अच्छा जितना हिस्सेदारी उतना भागीदारी, अगर इस पर हम जाए तो मेजॉरिटेरियन फिर आप सपोर्ट करते हो, फिर क्या सारे मेजॉरिटेरियन जो रिलीजन है उनको सारा हिस्सेदारी लेना चाहिए और माइनॉरिटी को कुछ मिलना नहीं चाहिए? तो उन्होंने इस चीज को ना एक दूसरे एंगल से इसको even when he spoke about it, he tried to give it a different spin of Hindu-Muslim, so to speak, or religious spin rather than the caste spin. So do you think that was deliberate? Yeah, very gracious with your words while talking to the Prime Minister. The fact of the matter is he is trying to communalize the whole issue. He's saying that if the Hindus are 80%, then why they should not grab everything? The fact is they have grabbed everything. The Muslims are the 14% of the population, maybe barely more than 14% of the population. The Sachar Committee report says that they are, the Sachar Committee report says that their situation is worse than Dalits. Their representation in the government job is almost 3%. So, yes, Hindus are 80%. So, Hindus should have 80% share in every sphere of life. But Muslims also deserve to have 40% of the share in every sphere of life.
Are they getting the 40%, 14% share? No, they are not. So I'm not getting into that debate. The issue is that he is trying to give a religious color, trying to give a communal color, and trying to divide again society on the Hindu-Muslims lines. And they are trying to create a scare among the Hindus. That's a sad part of it. I hope that after 10 years, since he became the prime minister, people should start realizing that this is the same trick which have been applied every time the elections are around. And people start thinking that is it the way to live in a society? There are other issues. There are unemployment. There's a price rise. And at a time when the unemployment rate within the 15 years to the 35 years is more than 24%. And among the graduates, it's more than 30%. So there are more pressing issues. But is government going to deal with that? Or the government is more happy with the Hindu-Muslim polarization? I think it's an easy way out for them because they don't have answers how to give employment to the people. एंड ये अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज, ये तो अपोजिशन पार्टीज ये मुद्दे उठा ही रहे हैं। साथ में जो कनाडा के साथ अभी रिलेशंस इतने खराब हो गए हैं, एक एंटी सिख सेंटिमेंट भी बहुत लोग इसको उछाल रहे हैं। दूसरा जो आपका ऑल दिस रेसलर्स प्रोटेस्ट हुआ और ब्रिजभूषण मामले में कई लोगों ने ये कहा कि ये सरकार एंटी विमेन है, तो विमेन्स रिजर्वेशन बिल लाने की कोशिश की गई, लेकिन देयर ऑल्सो you were puncturing holes into the whole thing कि ये तो बिल्कुल indefinite, कोई टाइमलाइन नहीं, कुछ नहीं। और अब इसके ऊपर अगर एक एंटी ओबीसी सेंटिमेंट आ जाए तो क्या ये पूरा मामला बीजेपी के लिए, रूलिंग पार्टी के लिए खतरा बन सकता है 2024 में? दिक्कत जरूर पैदा करेगा। ये इस पर डिपेंड करते कि सिर्फ मुद्दे उठाने से काम नहीं चलता। आप मुद्दों को जनता से कैसे जोड़ते हैं, लोगों के बीच में कैसे आप मुद्दे को लेके जाते हैं, लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं, और आपके मुद्दे क्या हर आदमी तक पहुंच रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। भारतीय जनता पार्टी की खासियत क्या है कि मीडिया उनके साथ है पूरी तरीके से, उनके पास एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी अनपैरेलल है। तो ये जो, और फिर उनके पास जो संगठन है वो सिर्फ बीजेपी का संगठन नहीं बल्कि उसमें आरएसएस के भी लोग हैं, तमाम लोग हैं उसमें। तो इसलिए उनका मुकाबला करना मुश्किल है। तो बीजेपी विपक्ष के जो लोग हैं वो इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, और इसकी वजह से बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट तब ज्यादा खतरा पैदा होगा जब वो लास्ट माइल तक अपने इस मैसेज को पहुंचा पाएंगे, जो गांव में बैठा हुआ एक बहुत गरीब आदमी को भी पहुंचा पाएंगे कि देखो आपको हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटा जा रहा है, लेकिन आपके बेटे को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर बेटे को रोजगार नहीं मिलेगा तो हिंदू या मुसलमान हो, भूखमरी की नौबत उसको आएगी। वो क्या करेगा? 30 साल का हो गया, अभी तक नौकरी नहीं मिल रही, या तो आत्महत्या करेगा, डकैती डालेगा, चोरी करेगा, यही तो करेगा वो। ये बात अगर लोगों को समझ में आएगी तो फिर इन सब चीजों का कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर ये बात समझाने के लिए आपको एक पूरी मशीनरी चाहिए, वो मशीनरी क्या विपक्ष की वैसी है आज की तारीख में बीजेपी की तुलना में बहुत कमजोर है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ मैसेज अपने आप लोगों तक पहुंच जाते हैं। क्या वो पॉसिबिलिटी है? मुझे लगता है वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन कब तक ये कहना थोड़ा मुश्किल है। पिछले 2 चुनाव में जितना मुझे आइडिया है अबाउट 35 to 40% वोट लेके एनडीए ने सरकार बनाए हैं। अब अगर हम उस हिसाब से प्योरली मैथमेटिकली देखें तो बाकी अगर 60% 65% एक साथ हो गए और इंडिया अलायंस का वही दावा है तो ये जो है द गेम कैन चेंज। Are you looking at it mathematically as well when you look at the India alliance, or you feel it will take much more than that? No, mathematics is definitely in favor of India alliance. There's no doubt about it, because in the last 2 parliamentary elections, BJP could not cross 40% vote share. First election 2014, they were just 31%. In 2019, they were just 37%, 37 plus something. So if a political party has got only 38% vote share, let's take it 38%. That means 62% population is not voting for them. I will not say that they're opposed to them, but they're not voting for them. If 62% of the population is not voting for them, that means mathematically India alliance has an upper hand. But politics is not only about mathematics. Politics is also about chemistry. Politics is also about management. How you manage your numbers, how you reach out to the people, and how you evolve a chemistry between the leader party and the common voters. I think that's where the opposition of the India alliance lacks.
and they have to work really hard to create that chemistry. There is a possibility. There is an anger everywhere. People are unhappy. There's no doubt about it. Everybody's monthly income is going down. So people are unhappy. But then opposition has to reach out. It's not so simple. Reaching out is not simple. And you not only have to reach out, but you also have to convince them. You have to tell them. You have to make them realize that how this government is working not for them, but against them. बट जो एक इलेक्शन स्ट्रैटेजी हम देखते हैं, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, कौन सा मुद्दा आपको लगता है सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है? इज इट वेलफेयरिज्म और बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स? इज इट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स? इज इट हिंदुत्व? और डू यू थिंक 2024 people are rising above all of this and people are only going to see ease of living, whether there has been progress in life? See, India is a semi-feudal society which pretends to be a modern one. It's a semi-feudal society. There's a lot of illiteracy in the country. There is a lot of conservatism in the country. Which has been ignited by the religious campaign of the BJP and the RSS. So India is getting more conservative on a daily basis. That way, identity issue will remain a very important issue. But there is also a section of the society, there is also openness where the secular issues like price rise, unemployment, these are also getting bigger. So either way, India Alliance and BJP Alliance both have to marry the identity politics with the welfareism and the secular issues. And secular issues in the sense, not in the religious terms, but in terms of the socio-economic issues. Like BJP will not only talk about Hindutva, they will talk about it, but they will also talk about it, how their government has delivered in the last 10 years. It is the job of the opposition parties to tell to the people that they have not delivered. And there are facts with them. The caste census is again an identity politics. When you talk about BJP talks about Hindutva, India Alliance talks about Hinduism. What you are doing is not Hinduism. It's Hindutva. It's a political ideology which you are pursuing. So the marriage of identity politics, welfareism, and other secular issues will be on either side. Whosoever is in a position to convince will decide the fate of the election. On that note, thank you so much. Glad you joined me today. I hope to continue having these conversations with you. Thanks, Ashutosh. Thank you.